So let's get started. We have a beautiful graphic here, you can see, and the guy is holding the socket and the plug. So you see how these two connect each other. Similarly, we are surrounded by a world which is interwoven very deeply in terms of networks, and the lock and the key for that at every joint or at every juncture, use that lock and the key is the API. API is nothing but the key to talk to another system. Okay. So we will see. We are just getting started. We'll try to keep it interactive. If you have any doubts, please ask me. It may get a little technical for some of you, but definitely, as I said, we'll try to make it user friendly and explain in terms of how APIs can be understood by general folks also, not just technical folks. It is definitely going to be useful for technical folks. Don't get me wrong. टेक्निकल को वालों के लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, टेक्निकल वालों के लिए ही है, बट इतना इसको सुंदर बनाया है विजुअली दीपिका ने, एंड वी आर हियर टू लुक एट इट फ्रॉम जनरल एंगल सो दैट एवरीवन कैन बी कंफर्टेबल विद एपीआई वर्ड, है ना. तो एपीआई का फुल फॉर्म से हम शुरू करेंगे, बट लेट्स सी द इंडेक्स हियर. व्हाट इज एन एपीआई? व्हाट आर रेस्ट एपीआईज? वी विल लर्न. Sorry, I have a bad throat. What are REST guidelines, API security, and Open API examples? So examples is nothing but a reference list of links and sources I can give you in the end, maybe to the interested folks, those who can go through and explore some of the APIs on their own. But to start with, we will start with the what is an API? Yes, it's a beautiful screen here. Just look at it for a second. And you see a client and a server. Server is nothing but not the computer server in this case. In case it is a chef who serves the food in the restaurant, and you see a waiter in between. What is an API? API is nothing but application programming interface. This is the acronym full form. Okay. It's nothing but an interface. Just forget the words, first two words for now. एप्लीकेशन भी हटा दो, प्रोग्रामिंग भी हटा दो. थिंक ऑफ एन इंटरफेस. आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, राइट? तो वहाँ पे कैंडी के मशीन्स होते हैं. देर आर automatic machines nowadays. If you go to Phoenix and DLF and all these big malls now, there are so many machines which are automated. There are automated vending machines in the office. There are automatic, basically, coffee machines everywhere. And there are various other machines which you can use to shop and do many things. ठीक है? तो ये सब क्या है? ये सब interfaces है. These are all nothing but APIs in a way. These are all interfaces to access a system. You want to book a ride on the train, you access an API. You want to book a ride on the toy train for your friend or kid, then you still click on the machine and basically punch in the money and then you print a ticket. Both are APIs, right? One is a physical interface, other is a programming interface. तो प्रोग्रामिंग इंटरफेस में हम क्या करते हैं? हम उसको कोड करते हैं. कोड के थ्रू एक्सेस होता है. वी कैन कॉल इट मैन्युअली और थ्रू मशीन और थ्रू कोड. मतलब कोड से कोड को कॉल करते हैं और मैन्युअली कॉल करते हैं. बट फिजिकल इंटरफेस में एनीवन कैन यूज इट, लाइक शॉपर्स और डे टू डे यूजर्स. सो एवरीथिंग इज नथिंग बट एन एपीआई. सो थिंक ऑफ, let's come back to this restaurant example. It will help you understand. Think of a user who goes to the restaurant and he orders, he wants to eat his favorite food. So he calls the waiter and he gives the order. Then the request is taken to the kitchen and the chef prepares the order. Once the food is ready, waiter again fetches the food and places that on the table. And then you enjoy the food. So waiter is nothing but an interface because you cannot talk to the chef directly. In some cases you can, in some cases you can, in some restaurants, but for practical purposes, let's say chef is inaccessible. Chef कौन हुआ इसमें? Chef हुआ हमारा core data, chef हुआ हमारा core logic, chef हुआ हमारा core business data. Think of it as a database. अब थोड़ा सा हम एक इसी का स्ट्राइकिंग इससे देखते हैं कि शेफ इज नथिंग बट योर कोर कंपनी डेटा, कोर डेटाबेस. वेटर इज नथिंग बट द एपीआईज and you are nothing but the customer or end user. Or whenever you go to a shopping mall or you book a ticket through a interface, just remember you are using an API. ठीक है?
You open your computer, you go to DOS prompt or you go to terminal, you type cd or you type ls, all these Linux commands, it lists files or change directory. These are also nothing but APIs. Okay. These are system APIs. These are system level APIs. Okay, let's go further. So what do APIs do? They let your product or service communicate with other products and services without having to know how they are implemented. ये last part बहुत important है ना. Without having to know how they are implemented. हमारा business logic हमको expose नहीं करना है ना. We don't want to show what we are doing or how we are doing rather. तो आप शेफ के पास जाके पूछोगे आपकी सीक्रेट रेसिपी लिख के दे दो तो बहुत अच्छा था खाना, लेकिन ठीक है हमने रेटिंग दे दिया 5/5, बट सीक्रेट रेसिपी भी लिख के दे दो तो आपको पता है वो लिख के नहीं देने वाला. he may smile or if you persist he may throw you out. लेकिन लिख के नहीं देगा वो सीक्रेट रेसिपी. सो व्हाई? बिकॉज दैट इज द बिजनेस लॉजिक. मैं थोड़ा थोड़ा उसको सिंपल एग्जांपल से ये कर रहा हूँ सो दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. So without having to know part is very important. This is the business logic that is hidden inside the APIs. And then on general, they will give you an interface. API will provide an interface for the outer world or anyone who wants to talk to your system or to your box, to your machine, to your desktop, or to your product. Okay. You allow an interface. You basically deliberately create a system. आप एक इंडेक्स कार्ड बना के ही रखते हो. आपका लाइब्रेरी है, आपका कुछ है, कोई फिजिकल स्टोर है, आपने पूरा बना के रखा है वहां पे, डोर पे चिपका दिया, क्लास डोर पे, कि लोग आके ये सब सवाल पूछते हैं 1 2 3 4 5, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस. फोन में भी एपीआई है, राइट? दिस इज कॉलिंग बेस्ड एग्जांपल. आईवीआर क्या होता है? आईवीआर इज नथिंग बट एन एपीआई. आईवीआर में जो आप इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स चूज करते हो उस हिसाब से इट विल कॉल पास सर्टेन रिस्पॉन्स टू एन एपीआई that will do something or that will connect your call, right? So think of them as very simple interfaces to talk to any system. आपने कोई भी सिस्टम बनाया है, you would need to make it user friendly, है ना? आपने like think of a writer example. ठीक है, एक ऑथर है, कोई राइटर है, ब्लॉगर है, तो वो अपने डायरी में नोट्स लिख रहा है, सब स्क्रैपी है, इधर उधर है, मिक्स है, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो नथिंग, राइट? तो वो डायरेक्टली उसको पब्लिश नहीं कर सकता ना. ही विल, लेट्स से ही वांट्स टू पब्लिश हिज डायरी और हिज स्टोरी और हिज बुक और व्हाटएवर, तो वो स्क्रैपी नोट्स तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको पता है. और स्क्रैपी नोट्स में अगर उसमें ऑर्डर नहीं है, उसमें कोई टेम्पो नहीं है, उसमें कोई थीम नहीं है, तो वो इट विल नॉट बिकम अ बुक. सो व्हाट हैपेंस? उसको वो थोड़ा अलाइन करता है, उसको ऑर्डर में लेके आता है, उसको रिवाइज करता है, राइट? ही बेसिकली रिवाइजेस द होल थिंग, ही फाइन ट्यून्स इट, है ना? ही रिव्यूज इट अगेन एंड अगेन until he gets what he wants, until it becomes in a shape that world can use or world can read, है ना? माइंड में पता है, you know what you're writing in the mind most of the time, but when you come back after some time you don't recognize it because ठीक से लिखा नहीं था. So APIs are nothing but giving your system a public view, giving your system an interface for people to talk to. It could be as good as I said, basically vending machine, as simple as vending machine or a terminal on your machine, or it could be a proper REST APIs like we are using in the system, core APIs that we use. Okay. So enough description here. You see the diagram, it's quite self-explanatory. End user or developer, they call the API to talk to the data. Think of this database or data, company data. So you are not exposing your data directly. It is secured in a database. And you are also not exposing it in rows and columns, or just like it is there in the SQL or in the tables. वैसा का वैसा नहीं दे सकते ना, किसी को समझ में नहीं आएगा रोज एंड कॉलम्स में क्या लिखा है करके, कितने हीलर है, क्या है. No one will understand. So you need an API. You need a proper user-friendly, manual defined gateway where people will come and they know what to press, what to punch, what kind of values to send, and what kind of output to expect even. तो swagger हम देखते हैं तो पूरा समझ में आ जाता है. Great. Let's move further. Meet this wonderful guy.
I keep asking this question, so maybe you can take a note. I keep asking this question in to a lot of people in the interviews also. And अभी तक किसी ने मुझे बताया नहीं है इनका नाम. So he is the father of REST APIs. He is the father of. He wrote the thesis. He is alive. He's very much alive. He's working with the principal as a principal scientist with Adobe. So Adobe we all know, right? By Adobe Photoshop and everyone. And he's also the co-founder of Apache. Apache Foundation is one of the biggest open source foundations in the industry of open source. And almost all, I think hundreds of Apache products are used all over the world by all the companies. Then he's a PhD from so and so. You see him. So he's Roy Fielding. He wrote the thesis and he presented his thesis as basically he brought the idea of representational state exchange state transfer, which is REST or RESTful APIs, as we will see. तो APIs हमने समझा है अभी तक बिल्कुल बेसिक्स, ठीक है कि API क्या है, एक इंटरफेस है. अब हम समझते हैं कि टेक्निकल में क्या होता है. सो इन द इंडस्ट्री और इन द सिस्टम, इन द कंप्यूटर सिस्टम्स और इन द IT systems, there were something called as a web services model. So web services technology evolved from the monoliths. So पहले monoliths होते थे. Monolith mean you have one application for everything. Everything is crammed into one. It could be PHP, it could be Java, it could be any other language, doesn't matter. But everything is crammed into one. When I say everything, you mean database queries, you mean HTML view, you mean business logic, you mean loops, repeatable. There is no reusability. It's a monolith, right? Monolith में भी order होता है, monolith में भी चीजें ठीक से कर सकते हैं, but then things evolve to more web or basically service-oriented model. Service-oriented model is SOA. It got famous with the name with SOA terminology. Some people will have heard about it. Some people will relate to it. So there was a service-oriented industry. Suddenly IBM and all these big guys had tools or platforms to support SOA-based architectures. तो SOA-based architecture में क्या होता है? एक WSDL होती है. XML based होता है ये पूरा. This is the previous generation of APIs. Or you can say REST APIs. They are not REST APIs, they are SOAP APIs basically. They are called as SOAP APIs. Simple Object Access Protocol. तो उसमें XML based होता था, and there is a WSDL, Web Services Description Language, which would define all the input and output parameters. Okay? We don't have an example for that because that technology is old now, and we are moving towards REST API. Rather, REST is also in use for quite some time, and technology is already evolving to even newer principles. Like for example, GraphQL. So GraphQL and SOAP is not in the scope of this session today. I am just giving a little context to give you a big picture कि कहाँ से शुरू हुआ जर्नी. तो पहले मोनोलिथ से हम सर्विस ओरिएंटेड में आया टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, और फिर सर्विस ओरिएंटेड में विजडल और सोप बेस्ड सर्विसेज होते थे जिनका नाम वेब सर्विस पड़ा. देन वेब सर्विस अभी भी कोई बोलेगा तो वेब सर्विस वर्सेस देन दिस basically Roy Fielding, the scientist that we saw, handsome scientist. He wrote a thesis in his PhD that came about as a REST principles guidelines, and that brought the revolution of REST or RESTful APIs. तो RESTful भी सुना होगा आपने, RESTful भी बोलते हैं, REST API भी बोलते हैं. REST is a short form. RESTful का मीनिंग होता है those who abide. If you write an API and they abide by the REST principles, it's called RESTful APIs. Okay. So some of this information I am giving you, which is extra, you may not see here. Let's come back to this thing. REST is an acronym for this. You can see the acronym. It's a representational state transfer. Okay. And it's an architectural style for a hypermedia system, distributed media system. So it basically resembles the internet. So internet, don't get too much into this. Internet पे हम क्या करते हैं? Browser खोला http://1234.com, right? तो REST भी ऐसे ही चलता है. REST APIs जो होते हैं, we started with the basics. We are understanding what is SOAP, and then now we are moving towards the REST. तो REST में क्या होता है? They are simplified. ठीक है? REST principles we'll see in few seconds now, but think of them as using through the internet. So you can use a REST API through a browser. As simple as that. You can call a GET request, and the browser typically जैसे चलता है. So what does it do? It basically fetches a resource for you. So when you do http://123.com/1.jpg,
So it goes to 123.com server and fetches that 1.jpg file for you. It is a resource. It is nothing but a API. You're using it through a browser. So using the principles of browser, this REST was invented. So you can use all those. However, browser में कभी-कभी हम गलत तरीके का implementation देखते हैं, but REST में you need to abide by this. Get, post, put, and delete. These are the CRUD methods that supported, and it was first presented by Roy Fielding in his famous dissertation in 2000. So that whole dissertation or thesis that he wrote is available online. We are getting into the REST guidelines now. तो अभी थोड़ा सा REST कैसे बनाते हैं हम, REST में क्या क्या होता है तो हम देखते हैं. So there are not much. There are 6 total high level guidelines that Roy Fielding had gave. ठीक है, in his original dissertation. तो उन्होंने 6 मेजर गाइडलाइंस बताए हैं. वो 6 स्लाइड्स यहाँ पे हैं. तो पहले हम झट से देख लेते हैं, just to give take an index kind of a view. So one is uniform interface. Then another is client server. Then it is stateless. Then it is cacheable, a layered system, and code on demand. ठीक है, code on demand, layered, cacheable, stateless, client server model, uniform interface. These are total 6 guidelines that were given by Roy Fielding in his original paper. And these explain high level guidelines for designing a REST API. तो स्पेसिफिक कैसे डिजाइन करना है वो इम्प्लीमेंटेशन सबका डिफर करेगा. हर कोई आप देखेंगे देयर आर सो मेनी एपीआईज, एवरीवन हैज एन एपीआई. बुक माई शो के एपीआईज हैं, यूट्यूब के एपीआईज हैं. एवरी कंपनी, एवरी सिस्टम हैज देयर एपीआईज, प्राइवेट और पब्लिक मे बी. एंड देयर आर सो मेनी पब्लिक एपीआईज दैट यू कैन एक्सप्लोर फॉर एस्ट्रो, from NASA, for GPS for international satellite locations, for weather, okay, for population, I don't know. There are so many. We will see some references in the end. तो जो इंटरेस्टेड है वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है, बट थिंक ऑफ देम एज एवरीवन विल एक्सपोज देयर एपीआईज एज अ यूनिफॉर्म वे टू टॉक टू द वर्ल्ड. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म आ गया, देख रहे हो वर्ड, राइट? यूनिफॉर्म इंटरफेस मतलब इट हैज टू बी सेम, इट हैज टू बी यूनिफॉर्म. ऐसा नहीं कल कुछ और था और आज कॉल कर रहे हो आप तो आज वो बदल गया, है ना? कल लाल बटन से कुछ आता था और आज लाल बटन से कुछ और आ रहा है. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इन्फॉर्म करना है. यू नीड टू अपडेट योर गाइडलाइंस, यू नीड टू basically version your APIs, you have to update your documentation, but think of your API as a uniform interface that will follows the principle of generality. तो हम ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं. सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स. सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स इज that human mind can only deal with 7 units of data at a time. So you should be segregating the concerns, है ना? सब चीजें एक में घुसाएंगे नहीं. One thing has to do one thing. Do one thing and one thing well. So API follows that principle. Single responsibility principle भी कह सकते हैं इसको, from the design principles. It is a uniform interface for everyone to use. It's common, it's easy to use, and it is documented. तो all API requests for same resource should look the same. तो अगर /healers/1 कर रहे हो तो आपको पता है हमेशा आप एक्सपेक्ट करोगे कि healer ID 1 का डेटा आएगा. It will not change. And if you're doing /get healers, then you always know that it will give you a list of healers. It will not change. It should not change overnight, right? It should not break. It should be uniform interface for everyone. Whether it is the code is written in JMeter, like a machine or a Java-based service or client, or whether the code is or a API is used by a end user, actually, directly from Postman or from your code. Eventually, it will be used by the code. तो आप जब मैन्युअली टेस्ट करोगे और फिर कोड बना के उसको एप्लीकेशन में कॉल रखोगे उसका, तो इट विल बी कॉल्ड बाय योर कोड, राइट? इट विल नॉट बी कॉल्ड बाय मैनुअल. ओके, सो दे हैव अ यूनिफॉर्म इंटरफेस. क्लाइंट सर्वर ये बहुत सिंपल एक्सप्लेनेटरी है, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे. एवरीवन में अंडरस्टैंड दिस और एटलीस्ट रिलेट टू इट. तो एक सर्वर होता है और वेरियस क्लाइंट्स होते हैं. तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल बहुत कॉमन है टेक्नोलॉजी में, बहुत सारे आर्किटेक्चर्स में ये यूज होता है. तो रेस्ट में भी दे आर सजेस्टिंग टू यूज द क्लाइंट सर्वर मॉडल by separating the user interface from the data storage server. क्योंकि क्लाइंट और सर्वर जब एक में घुसा देते हैं तो मोनोलिथ बन जाता है, which I explained earlier, right? So this is another one further technology after monoliths. Monolith, just think of it as a one big system which is doing everything and everything is mixed into everything. There is no segregation, there is no separation. See, there is no multiple machines also. It's just one machine. But client server में क्या है?
you have segregated the concern. अभी सर्वर का काम कर रहा है, it will serve the data, it will create database, it will, you know, but clients are the one and users having a API to call the server. ठीक है. स्टेटलेस क्या होता है? स्टेट हम बहुत स्टेट बहुत सारे लोगों ने हमने सुना होगा. स्टेट इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ योर सिस्टम एट एनी गिवन पॉइंट. तो टेक्निकल इसमें बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होता है. वी हैव अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट एंड एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन योर कोड रन्स. तो उसमें ऑब्जेक्ट बनते हैं. ऑब्जेक्ट हैज अ स्टेट, है ना. तो देयर इज अ पर्सन तो और उसका मूड खराब है अभी. देयर इज सम जॉन एंड ही इज नॉट फीलिंग हैप्पी. तो जॉन इज द ऑब्जेक्ट एंड हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड. सिमिलरली टेक्निकल इसमें एक ऑब्जेक्ट है और उसका एक स्टेट है, उसका एक कंडीशन है, उसके एक स्टेट हो सकता है, उसके वेरिएबल्स है और उसमें इंफॉर्मेशन. तो रेस्ट एपीआईज आर स्टेटलेस. अभी हमने समझा स्टेटलेस का मीनिंग क्या हुआ कि रेस्ट एपीआईज विल नॉट स्टोर योर इंफॉर्मेशन और will store information, rather to be clear, will not store information about you. ठीक है. जैसे आपने मशीन रखा है, जैसे बताया उधर वेंडिंग मशीन. सो वेंडिंग मशीन विल नॉट बेसिकली रिकॉग्नाइज यू कि आप कल भी आए थे, राइट. आपको मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा डिस्काउंट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता. बिकॉज machine is the same. Machine operates like a machine. You press the button, you get the coffee. If you don't have money, you basically don't get the coffee. So they are stateless. They are not storing information about you. They are not storing any metadata about you. तो इसलिए रेस्ट एपीआई में जो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी की यूज होती है वो JWT वगैरह यूज होता है, विच इज स्टेटलेस. हम देखेंगे आगे वो थोड़ा सा. बट स्टेटलेस जस्ट अंडरस्टैंड कि वो कुछ स्टोर नहीं करता. पहले कैसे होता था, हाउ यू विल रिलेट टू इट. तो पहले सर्वर क्लाइंट का हमने एग्जांपल देखा. तो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजीज में पुराने इसमें क्या होता था, सर्वर विल स्टोर द स्टेट ऑफ द यूजर. जैसे यूजर ने कल लॉगिन किया बिग बास्केट पे और कुछ सामान ऑर्डर किया और ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया. तो अब कल आप लॉगिन करते हो तो कार्ट में रहता है ना वो सामान रहता है कि नहीं रहता है? रहता है Yes, sir. दैट इज द स्टेट. तो वो सर्वर क्या कर रहा है, आपकी स्टेट स्टोर कर रहा है वो, है ना. तो सर्वर को पता है कि किसने लॉगिन किया था और कितने आइटम डाले थे और क्या क्या कॉस्ट था, और वो ये भी बता देगा कि आज प्राइस बदल गया है, आपको ज्यादा पैसा लगेगा, राइट. तो स्टेट स्टोर करना और स्टेट स्टोर नहीं करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं. ठीक है. सम टेक्नोलॉजी यू विल सी दैट विल स्टोर द स्टेट, सम टेक्नोलॉजी यू विल सी दैट इज नॉट स्टोर द स्टेट. तो हमारे केस में क्या होता है, whenever you use REST APIs, you are not storing the state of the user. You are only storing the data in the database, which is accessible by the APIs. But API itself is not relying on any of your basically favorism or session data. ठीक है. Servers aren't allowed to store data related to client request. ये allowed ही नहीं है इसमें REST में. तो servers cannot basically create a session, cannot create कि भाई ये यूजर कल भी लॉगिन किया था. नो, दे विल नॉट स्टोर. आपको टोकन लेके जाना पड़ेगा कल भी ओनली देन इट विल अलाउ. तो ऐसा नहीं कि कल मेरे टोकन दिया था, मैंने आज तुम्हारा टोकन रखा है संभाल के. तो कुकीज क्या होता है, कुकीज भी स्टेट होती है हमारे ब्राउजर में, स्टोर कर लेता है वो. आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, वो कुकी में रख देता है, तो वो अगली बार आपका लॉगिन आपको नहीं करना पड़ेगा. तो ये सब स्टेट है अलग अलग. एप्लीकेशन स्टेट हम स्टोर करते हैं, टोकन स्टोर करते हैं, कुकी स्टोर करते हैं. तो रेस्ट इज सपोज टू बी स्टेटलेस. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट. तो ये तीन हमने देखे, यूनिफॉर्म, क्लाइंट सर्वर एंड स्टेटलेस. लेट्स सी कैशेबल. इट्स वेरी सिंपल. हम कैशिंग यूज करते हैं हमारे सिस्टम में भी. Our system uses basically Redis cache and also Hibernate built-in cache. Cacheable का मतलब होता है when possible resources should be cacheable to save the bandwidth, to save the network. समझो अभी ये वेंडिंग मशीन है का एग्जांपल वापस लेते हैं. सिंपल, वो ज्यादा इजी है समझने के लिए, इसलिए मैं वो ज्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ rather than more technical examples. Think of a coffee machine. You go to the vending machine and you press your favorite button. You want your latte and and all that. Imagine करो अगर वो मशीन रोज सारे डेटा पहले सर्वर से डाउनलोड करे. आपने प्रेस किया लाटे, अब वो पूरा सर्वर पे लोड कर रहा है मशीन पहले कि चलो सिस्टम अपडेट करो, फिर कॉफी के फ्लेवर्स कौन से हैं, ये है वो है. तो अगर कुछ बदला नहीं है तो अपडेट करने की जरूरत नहीं है ना, है ना. तो अगर एपीआई आउटपुट सेम है, समझो किसी ने गेट हीलर्स किया,
हमारे सिस्टम के एग्जांपल से अभी देखते हैं। किसी ने गेट एपीआई कॉल किया हीलर्स, तो एक लिस्ट ऑफ हीलर्स आ गया 1 to 6। अब उसने 10 मिनट बाद फिर से कॉल किया गेट एपीआई, किसी और सिस्टम से कॉल आया या उसी एंड यूजर ने कॉल किया गेट हीलर्स, तो सेम ही रिस्पॉन्स आया ना। तो अगर ये सेम रिस्पॉन्स हम बार बार जो है, इस सेम रिस्पॉन्स को देने के लिए अगर कुछ चेंज नहीं है और हम बार बार से वो पूरा डेटाबेस में जाके उसको बिल्ड करते हैं ना, तो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, इट अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। थिंक ऑफ 1 million users now. Increase your scale. Visualize 1 million users breaking the keyboard over your machine, over your system। क्या ये चल क्यों नहीं रहा, ये इतना हैंग क्यों हो गया है, राइट? कभी हैंग हो जाता है तो हमें कैसा लगता है, हमें पता है। पेटीएम आप बुक कर रहे हैं, टैक्सी और बुक नहीं होता है, आपने पेमेंट कर दिया, यूपीआई डाल दिया, लेकिन पेमेंट हुआ ही। तो हाउ फ्रस्ट्रेटेड यू गेट, राइट? 1 सेकंड के लिए क्या लगता है, अरे क्या है इनका एपीआई, क्या सिस्टम है, राइट? तो कैशेबल का उसमें पावर है, बिकॉज इट सेव्स बैंडविड्थ, इट सेव्स द नेटवर्क। तो कैशेबल का मतलब क्या है, बस आप कैश में से रिटर्न कर दोगे। आपने 6 हीलर्स, जैसे गेट हीलर्स का एग्जांपल 1 to 6, एक वो स्टोर कर दिया रिस्पॉन्स कैश में, वो ऑब्जेक्ट, और दोबारा जब कॉल आ रहा है और अगर चेंज नहीं हुआ है तो आपने कैश से उठा के दे दी, ठीक है। नाउ कैशेबल इज अ वेरी वेरी बिग टॉपिक, अगेन दिस इज नॉट इन स्कोप टू एक्सप्लेन कैश हियर। कैश का बहुत सारा कैश बस्टिंग होता है, कैश टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स भी होते हैं, बट थिंक ऑफ रेस्ट एपीआईज फॉर नाउ। एपीआई शुड बी कैशेबल, देन एपीआई शुड बी हैविंग अ लेयर्ड सिस्टम। लेयर्ड सिस्टम का मतलब होता है वन के ऊपर दूसरा है, दूसरे के ऊपर तीसरा है। आपने बुक माई शो को कॉल किया, बुक माई शो ने जीपीएस को कॉल किया, जैसे मैंने और एग्जांपल्स बताया था कि उसने वेदर को कॉल किया, आपकी लोकेशन को लिया, फिर लोकेशन से आपके फिर रिकमेंडेशन सिस्टम में आपका आईडी डाल के सब निकाला देता। सो बेसिकली वन सिस्टम इज कंप्राइजिंग ऑफ मल्टीपल सर्विसेज, और यू कैन से माइक्रो सर्विसेज, और यू कैन से एपीआईज, ठीक है। तो ये एपीआईज एक दूसरे को कॉल करते हैं बिकॉज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे हमारे केस में भी ये होता है, स्वरा को पता है कि अगर बुकिंग बनाते हैं तो हीलिंग बनती है। अभी हम वो कर रहे हैं सिस्टम, राइट? वी आर building that logic that if someone creates a booking, we want to assign healers to that booking automatically। तो ये क्या है, लेयर्ड सिस्टम है। एक लेयर के बाद दूसरा लेयर आ रहा है, दूसरे लेयर के बाद तीसरा लेयर आ रहा है, फिर वो डेटाबेस में जाएगा, फिर वो कैश लेयर में जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। लेयर सिस्टम का मतलब सिर्फ एमबीसी नहीं होता, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर भी सुना होगा कुछ लोगों ने, इट्स अ प्रिंसिपल इन बेसिकली टेक्नोलॉजी। तो एमबीपी जस्ट थिंक ऑफ एज 3 सिस्टम, जैसे मैंने बताया वो रेस्टोरेंट के एग्जांपल से समझते हैं। लेयर मतलब आप रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं, बाहर टेबल्स है, देयर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस वेयर म्यूजिक इज गोइंग ऑन, एंड एंड सम person is singing and you are enjoying the cuisine and the atmosphere, and you call the waiter and you order, and then the waiter goes to the kitchen, takes your order to the chef, and once the order is completed it brings it back। ये एग्जांपल हमने देखा था। तो इसमें भी लेयर है। तो जो बैठने का एरिया है, सीटिंग एरिया वेयर द कस्टमर इज सीटेड इन द रेस्टोरेंट, इज द प्रेजेंटेशन लेयर, इज द फेस ऑफ योर वेबसाइट। वो आपका फ्रंट व्यू है, सिर्फ आगे आगे से बैठने का कस्टमर पोर्शन, वेटिंग टेबल्स और ईटिंग टेबल्स, राइट? बट आपको अंदर नहीं दिखाएंगे वो कभी। सपोज आप बोलेंगे नहीं मैं किचन में बैठ के खाना चाहता हूँ, तो दे विल नॉट अलाउ यू। वो बोलेंगे मुझे किचन देखना है, वो भी अलाउ नहीं करेंगे। और अगर देखना भी है तो यू नीड टू फॉलो देयर गाइडलाइंस, ठीक है। तो द आइडिया इज वी आर नॉट शोइंग अवर सर्वर्स टू एनीवन, नो वन इज वांट्स टू शो देयर सर्वर्स टू एनीवन, और बेसिकली डेटाबेसेस टू एनीवन। इसीलिए डेटाबेस एक्सेस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। So now you understand, some of you will understand maybe that why database should not be easily accessible. Also why API shouldn't be easily accessible. We will get into that. API security is one portion. We'll try to cover some three. तो लेयर सिस्टम होता है, किसी भी तरह के लेयर हो सकते हैं। टेक्निकल फ्रेमवर्क्स में हम देखते हैं एमबीसी लेयर होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, या फिर ऐसा होता है प्रेजेंटेशन लेयर होता है, देन यू हैव अ सर्विस और एपीआई लेयर, एंड देन यू हैव अ बैकएंड लेयर और डेटा लेयर। इस तरह से भी हम देखते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर लेयर्ड सिस्टम्स, एंड द लास्ट वन इज कोड ऑन डिमांड। तो कोड ऑन डिमांड कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जस्ट थिंक कि अगर रेस्ट एपीआई से हम कोड भी चला सकते हैं, मतलब जैसे कि कुछ जावास्क्रिप्ट विजेट्स है या जावास्क्रिप्ट कोड है, वो एग्जीक्यूट हो सकता है। लाइक आपने कुछ कॉल किया एपीआई और वो एप्लेट या जावास्क्रिप्ट चल के या एचटीएमएल रन होके आपको दिखेगा आउटपुट उसका, या उसका एचटीएमएल आ जाएगा। तो इन्होंने प्रिंसिपल में बताया कि यू शुड कोड ऑन डिमांड, कि ऐसा नहीं कि आपने कोड रन करने का एपीआई बनाया है और जैसे ही क्लिक किया वो रन हो गया, या किसी ने भी कॉल किया तो रन हो गया। इट शुड ऑलवेज रन ऑन डिमांड। पहले तो मतलब इट शुड बी सिक्योर,
and then it should not be run by unauthorized resources. That gets into security. वो हम वहाँ पे जाएंगे अभी in few minutes. But think of code on demand as code principles. That code should only run when needed. It should not do any harm. It should not run maliciously. It should not run automatically also. If your API is executing any code, it should only run on demand with explicit security and with explicit permission and only when needed. ठीक है, for example. क्योंकि इससे bugs and viruses का हो जाता है. So people will not even trust your API then if you are running malicious codes, right? So these are the 6 principles. Now we are getting into some more terms that you will find familiar with in the REST API world. तो आप REST API के बारे में पढ़ोगे या REST API यूज करते हैं या और if you use any other API, you will hear this familiar terms. तो कुछ नाम सुनने को मिलते हैं. रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कुछ लोगों ने सुना होगा. कुछ मैंने लेयर्स बताया अभी, डेटा लेयर, सर्विस लेयर, फ्रंट एंड लेयर और this thing, right? Similarly, there are some terms, some basic terms. Again, we will not go into very much technical aspect of each of these, but most of you are already familiar with our core APIs that we are using. Okay, so you may be able to relate to it. So there is a resource. Everything is a resource in API. रिसोर्स क्या होता है? जैसे हमारे सिस्टम में क्या है, हीलर्स हैं, यूजर्स हैं. तो हीलर क्या है? एक रिसोर्स है. यूजर क्या है? रिसोर्स है. बुकिंग क्या है? रिसोर्स है, राइट? So everything is a resource. All our entities, business entities, can be called as a resource. In API, you access a resource. You can access a resource with a specific ID. You can access the list of resources and so on. Every resource has a resource identifier. You can see a line here. Resource identifier is used to identify a resource. तो हमारे सिस्टम में भी हर एंटिटी का एक यूनिक आईडी मिलेगा आपको. जो भी हीलर बनेगा उसका एक आईडी है, जो भी यूजर बनेगा उसका एक आईडी है. वो आईडी यूज करके आप रेस्ट से उसको निकाल सकते हैं डेटा. वो आईडी यूज करके आप उसको यू कैन एक्सेस इट्स एपीआई एंड कॉल द रिसोर्स. तो रिसोर्स मतलब एनी बिजनेस एंटिटी. हेटिओआस. दिस इज क्वाइट अ चैलेंजिंग वर्ड. ये प्रोनाउंस करने को भी टाइम लगता है, समझने को भी टाइम लगता है. बट आई विल मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू. इट्स नथिंग बट लिंक्स इन योर एपीआई. ठीक है, तो इसको मैं पूरा जार्गन में एक्सप्लेन नहीं करूंगा. हाइपरमीडिया एज इंजन ऑफ एप्लीकेशन स्टेट, इसका फुल फॉर्म होता है एपीओएस का. जस्ट थिंक ऑफ इन वेरी डमी यूजर टर्म्स, वेरी सिंपल टर्म्स के एपीआई में लिंक्स होते हैं. अब ये देखो, अकाउंट का एग्जांपल यहाँ पे दिया है. वेरी सिंपल डायग्राम हियर. तो डायग्राम में देयर इज नथिंग बट एन एपीआई. And you see on the top how the API basically calling parameters. It's a get request and you are getting accounts, slash accounts. So typically you are getting a list of accounts and then slash you are passing also a number which seems like an ID. And there is a host जिस पे ये कॉल किया गया, bank.example.com. ऐसा हम लोग भी postman में कॉल करते हैं, तो हमारा ऐसा ये स्क्रीनशॉट हम निकाल सकते हैं अपने API. And you see the response below, which is 200 OK response. And you see the account resource returned. ठीक है, अकाउंट का एक जेसन आया है. जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बोलते हैं. जेसन भी हम थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो कवर करेंगे हल्का सा. जेसन इज नथिंग बट लाइक एचटीएमएल. थिंक ऑफ लाइक एक्सएमएल देखा है हमने, कुछ लोगों को पता है. एचटीएमएल पता है, एक फॉर्मेट होता है बस, सिंपल. तो जेसन इज नथिंग बट अ सिंपल फॉर्मेट दैट इज टिपिकली यूज्ड बाय एपीआई. तो अकाउंट का डेटा आया है. यू सी एन अकाउंट नंबर, यू सी बैलेंस, यू सी यूएसडी करेंसी है, लिंक्स आए हैं कुछ, डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स, ट्रांसफर्स, क्लोज रिक्वेस्ट. तो नाउ दिस इज वेयर द थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग, है ना. This is where this serves like a vending machine. Okay, what to do next? Press 2 to get another coffee. है ना. Press 3 for this. तो ये लिंक्स क्या बता रहा है कि डिपॉजिट करना है तो ये लिंक पे जाओ, विड्रॉल करना है तो ये लिंक पे जाओ, ट्रांसफर करना है तो इसको कॉल करो, क्लोज को कॉल करना है तो इसको कॉल करो, राइट. तो ये दीज आर हेल्पफुल लिंक्स गिवन बाय एवरी एपीआई. दिस इज नथिंग बट हेटिओआस. So if you support links, basically you are supporting HTOS. Your API is mature to support HTOS compatibility. ठीक है, let's get into the interesting part. HTTP methods होते हैं. हम appropriate verbs use करते हैं. जैसे business entity के लिए मैंने बताया कि nouns use करते हैं. Healer है, user है, booking है, request है. These kind of noun words we typically use for entities. And then you use the right verb based on the operation you want to do.
ठीक है, तो अगर CRUD से ये चारों बनता है। C मतलब क्रिएट, तो अगर आपको क्रिएट ऑपरेशन करना है तो आपको पोस्ट यूज करना है हमेशा। तो एपीआई लिखते वक्त माइंड मी डोंट थिंक वाइल कॉलिंग, जो कोड किया होगा वही कॉल कर पाएंगे ना। तो अगर क्रिएट करते वक्त अगर किसी ने पुट रखा है वहां पे, तो उसका डिजाइन ही गलत किया हुआ है, राइट? इट इज नॉट complying with this CRUD principles or HTTP method or REST principles, so to be specific. तो CRUD के लिए ये वाले verbs ही यूज करते हैं हम जनरली। इट शुड बी कंप्लायंट, इट शुड बी यूनिफॉर्म, सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स। क्योंकि देखो ना, अगर दुनिया में आप सारे एपीआई पोस्ट यूज करते हैं और अगर हम पुट यूज करेंगे हमारे क्रिएट के लिए, हालांकि पुट भी यूज होता है क्रिएट करने के लिए, यू कैन यूज पुट आल्सो टू क्रिएट अ रिसोर्स, बट इफ यू अलाउ पुट, पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड। So you have to be uniform. C for create, R for read, U for update and D for delete. तो ये चार तरह के ऑपरेशन होते हैं। आपका हीलर है तो ये चार चीजें हम उस पर कर सकते हैं। क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। रीड में एक और आता है, रीड अ लिस्ट। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू शुड डिफाइन द वर्ब्स व्हेन यू डिजाइन फॉर दिस।